111 ETHEL है वो ETHEL नहीं computation of tax asset trading profit of for the year ended October 23 assuming that she opted that account using cash basis and HMRC flat expense adjustments. Your answer should be supported with brief notes to explain how you treated transactions in notes 1 to 4. Okay, और नीचे accrual basis पे बना. Okay. Accrual basis. Ethel Brown started to run a small bread and breakfast business as sole trader on 6th of April 2022. She prepared the first set of accounts for the year ending 5th of April 2023. She has read about the cash basis of accounting and HMRC flat rate expense adjustments, which are intended to simplify tax accounting small businesses. In the year to April 2023, she has the following transactions. Ethel earned income of 74,500 during the year. At 5th April 23, 10,000 of the income was still outstanding. The cash basis was 64,000. 64,500. Accrual basis में 74 लिख देंगे. Payments of 25,000 in respect of food, utilities, and other household costs. She lives in part of the bed and breakfast with her husband with 2 children, and 35% of the food and utilities and other household expenses related to private use. The HMRC flat rate private use adjustment for 4 occupants of business premises is 7,800. Flat rate private use. Payment of 25,000 aspect of usually 35% उसका प्राइवेट यूज का था तो यहाँ पे हम 65% लेंगे मेरे हिसाब से. और we are already getting 78,000 each, so wait, वो एडजस्टमेंट आएगी क्या इसकी से वो आनी चाहिए. ये देखो डबल इफेक्ट हो जाएगा.
Let's check later. On 1st of June 22, ETHEL paid card is a 14,000 by check for car with CO2 emission of 40 grams per kilometer. She also made payments totaling 3,000 relating to the running cost of the car for the year end. She has used the car 40% of the time for private use adjustment for the private purposes, and she drove 11,000 miles during the year. Okay. I used the car for 40% of the time for private use. So 11,000 का ही कर लेते हैं. तो 40% टाइम तो प्राइवेट यूज तो उसको खाली बिजनेस का मिलेगा. तो होता है उसको मिलने चला मिलेगा. फिर लिख देते हैं. Avi, your voucher she acquired at a kitchen of 350 on credit terms. She made us a supplier invoice of 15th of April 2023 on credit terms यानी कि accrual basis. तो इसमें क्या basis में ये नहीं आएगा. She also paid for running cost of the car. Running cost का एक होता है. As far as the food is concerned, मुझे लगता है कि यहाँ पे 25,000 पूरा लेंगे और नीचे एक्रूअल बेसिस पे हम प्रोपोर्शनेट करेंगे. तो एक बार ट्राई करके देखते हैं. इवन कुछ रॉन्ग तो पता चल जाएगा. स्टेप ये डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस इतने हैं. तो और कोई एक्सपेंसेस हैं वैसे. ठीक है. एक्सपेंसेस यानी कि ये एक्सपेंसेस हैं. Let's check this minus this 42 530. Let's check. चल आंसर क्या है. 42 550 530 550. Let's check. 64. ये परफेक्ट आया है यहाँ तक. नो वरीज नो वरीज तक नो वरीज. उसके बाद यहाँ पे इशू है 4750 का. चेक करना पड़ेगा क्या इशू है. They have taken the whole deduction. पढ़ लेते हैं. Cash, sorry, car used for private and business purposes. Cash payment in respect of the purchase of the purchase and running cost of the car totaling to 17,000 are not deductible from trading profit, and capital allowances are not available. Instead, tax deduction for car is allowed using the approved mileage allowances is for business mileage as follows. What is within a business mileage? 11,000 business miles during the year. 11,000 business miles दिया था directly. तो यहाँ पे आएगा 10,000
वहाँ पे आएगा 1000.25। रनिंग कॉस्ट ऑफ द कार यहाँ पे नहीं आता, वो नीचे आने वाला। फिर हम इसकी लिंक दे देंगे एंड आंसर विल बी करेक्ट। ओके राइट, और बिजनेस में इसको मैं नहीं देगा। आगे रेवेन्यू, अभी ये एक्रुअल बेसिस पे करते हैं। रेवेन्यू ये करना है लेस, तो यही है मतलब। तो यहाँ पे हमको प्रोपोर्शनेट करना है 25,065। किचन एक इक्विपमेंट वॉज ऑन क्रेडिट टर्म्स, तो सबसे पहले हम डाल देते हैं कि उतना हमें पता है। किचन इक्विपमेंट वॉज ऑन क्रेडिट टर्म्स 350। फिर ऊपर से पैसे स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू का हमने एडजस्टमेंट किया, पेमेंट का भी हमने एडजस्टमेंट किया उसको, पर उसको यहाँ पे एक्रूअल बेसिस पे खाली प्रोपोर्शनेट करना था, वो भी हमने किया। फिर आगे बचता है खाली कार का एडजस्टमेंट अभी। Ethel paid Cardinal 14,000 by check for the car, the car with CO2 emission of 40 grams. She also used payments from 3,000 get into running cost of the car. तो तो रनिंग कॉस्ट of the car आएगा, लेकिन उसका 60% ही आएगा मुझे ऐसा लगता है। 3,000 into 0.6, ये देखो यार। I use for private purposes 40% of the time, तो मुझे लगता है उसको बिजनेस में खाली 60% का ही बेनिफिट मिलेगा। बाकी तो यहाँ पे सेकेंड एडजस्टमेंट में हम यहाँ पे कैपिटल अलाउंसेस बनाएंगे, या सीधा मेन पूल में जाती है ये कार। 14,000 अलाउंसेस। 40 ग्राम से तो FIA नहीं मिलेगा। इंटू 0.6 की बिजनेस के लिए यूज हो रही है। यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट डू वन थिंग। तो 0.18 करते हैं, यहाँ पे 0.6 लिखते हैं, अलाउंसेस में ऐसा लिखते हैं। This have to add everything now. Adjusted trading profit, तो मेरे हिसाब से 54,588 आ रहा है यहाँ पे। तो कोई चीज नहीं थी मैं जो मिस कर रही। अराउंड 300। चेक करते हैं आंसर। 54,588। 54,588। और इन्होंने इक्विपमेंट जीरो लिखा है। ओके, सो दे हैव कंसीडर्ड इट एज ए। ओके राइट, AIA की तरह कंसीडर किया। ओके दैट्स मच बेटर एक्चुअली। किचन इक्विपमेंट उन्होंने उस चीज का रिडक्शन गाइस यहाँ पे ले लिया है। 350 AIA, 350, 350 टोटल अलाउंसेस।
टैक्स सेविंग कितनी हो रही है कौन से बेसिस पे, वो हमें मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया होगा। नहीं, अच्छा इतने ही क्वेश्चंस है। तो ये तो ओनली 2 क्वेश्चंस। 10 मार्क के लिए कई बार वो यहाँ पे बोल देते हैं कि टैक्स सेविंग कितने की हो रही है, सो जस्ट टेक द डिफरेंस एंड उतने का टैक्स सेव हो रहा है, दैट्स द सर। और क्या नेट का इशू रहेगा तब तक दे हैव आल्सो गिवन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बोला है कि योर आंसर फॉर कैश बेसिस शुड बी सपोर्टेड विद ब्रीफ नोट्स टू एक्सप्लेन हाउ यू ट्रीटेड ट्रांजैक्शंस इन नोट्स 1 to 4। तो 1 के तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि इनकम ऑफ 10,000 ऑफ वाज आउटस्टैंडिंग। So on cash basis, we don't take the income outstanding. We always take the income which we have earned. क्योंकि कैश बेसिस कैश इन कैश आउट पे चलता है। सेकंड इसमें बोलेंगे कि द HMRC फ्लैट प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट फॉर 4 occupants was 7,800, thus the whole payment of 25,000 in respect of food utilities has been taken into consideration without reducing the 35% of food utilities and other household costs that relate to private use. देन किचन इक्विपमेंट में भी हम लोग सीधा सीधा वही बोलेंगे कि 350 इज ऑन क्रेडिट टर्म्स, सो इट इज नॉट बीन इंक्लूडेड ऑन इन कैश बेसिस। और एक बार खाली कार का हम पढ़ लेते हैं। The cash payments in respect of purchase and running costs of the car totaling to 17,000 are not deductible from trading profit, and capital allowances are not available. Cash basis पे नहीं होते capital allowances. Instead of tax deduction for the car is allowed using approved mileage allowances for business mileage as follows. ये बिजनेस माइलेज हमें सीधा सीधा दिए गए थे 11,000, हमें लगा कि ये फुल दिए गए माइल्स, इसलिए हमने उसको पहले प्रपोर्शनेट किया था, और सीधा सीधा बिजनेस माइल्स दिए गए। और kitchen equipment tax deduction can be claimed for trading profits for the full cost of kitchen equipment when the invoice is paid. No tax deduction is therefore allowed on accounts for the year 5th of April 23, but ETHEL will obtain tax deduction of 350 from trading profit for the following year 2024, यानी अगले साल वो क्लेम कर सकता है ना, बताया गया है। एक बार इनकम पढ़ लेते हैं। द इनकम फॉर 10,000 आउटस्टैंडिंग इन at the year end is excluded when calculating the profit using cash basis. When using cash accounting, income is only included if it has been received during the period. Business premises used partly for private purposes. The total payments of 25,000 can be deducted from trading profit, but the flat rate private use adjustment of 7,800 must be added to the trading profit for the tax purposes. A net deduction from the trading profits of 17,200 can therefore be claimed for tax purposes. इन्होंने कुछ नहीं, बस इन दोनों का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे दिया हुआ 17,200, नथिंग एल्स। ये गाइस, so thank you so much for watching and bye.